हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एक्सीडेंशियल टूरिस्ट, जिसकी ऑथर बिल ब्राइसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज अ स्मॉल प्लेस because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. Here, the author reflects humorously his experiences as a traveler. दे मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक वर्ल्ड एक छोटा सा जगह है जहाँ पे घूमना फिरना बहुत इजी हो चुका है। और बहुत और ऐसा नहीं कि सारे लोग उसको इजी मानते हैं कि यहाँ से तो वहाँ जाना है, इजी तो है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग इजी मानते हैं इसको, कुछ लोग मुश्किल मानते हैं। और ये जो ऑथर है वो अपना फीलिंग्स बताते ह्यूमरसली एज अ ट्रैवलर। Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up by standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. My particular specialty now is returning to hotel desk or 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. I was thinking about this the last time when we went in family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. I also remembered that I had put the card in the carry-on bag but was hanging around my neck, and here's where the trouble started. तो इतने लाइंस में पोएट ये बताए हैं कि पोएट नहीं वो सॉरी पोएट यार सॉरी टिकर सॉरी पोएट नहीं जो ऑथर है इस चैप्टर के बिल ब्राइसन, उन्होंने बताया है कि एक लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड का मतलब है जैसे आप जैसे रह रहे वैसे दुनिया में बहुत रहना आउटस्टैंडिंग है। और वो हमेशा जो ऑथर है इसके वो हमेशा वंडर और नंबर ऑफ थिंग्स मतलब सबके साथ एक the number of things that other people do without any evident difficulty, but that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for a laboratory and my alley on wrong side of the self-locking door. My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. तो जो इसके ऑथर हैं वो थोड़े कंफ्यूज टाइप के हैं कि वो जैसे वो अपना रूम नंबर भूल गए तो वहाँ से घूम रहे फिर रहे कि मेरा कौन सा रूम नंबर होगा। तो मतलब कंफ्यूज टाइप के ऑथर है। और वो लास्ट टाइम के बारे में सोचते हैं कि जब हम अपने फैमिली के साथ बिग ट्रिप पे गए थे और उस समय ईस्टर का वो था। तो ईस्टर एक फेस्टिवल होता है और वो इंग्लैंड जा रहे थे एक वीक के लिए अपने फैमिली के साथ। जब वो अपने लोगन एयरपोर्ट पहुंचे, बोस्टन में इंग्लैंड में है, और जब अंदर जा रहे थे तब बॉस्टन एयरपोर्ट पहुंचे तो वो बॉस्टन एयरपोर्ट पहुंचे
बॉस्टन में ये लोगन एयरपोर्ट पहुंचे और वो अंदर जैसे ही जा रहे थे कि उनको ध्यान आया कि उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज रिसेंटली ज्वाइन किया है एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में। और उन्होंने उनको ये भी याद आया कि अपना जो कार्ड है वो अपने कैरी ऑन बैग में रखे हैं जो उन अपने नेक के साइड में हैंग करके रखे थे। और यहीं से उनका ट्रबल शुरू होता है। The zip on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked on it at it with grunts and frowns and increasing consternation. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge, so I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. Abruptly, the zip gave away. The side of the bag flew open and everything within newspaper cutting and other newspaper, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazine, passport, English money bill was extravagantly ejected over an area about the size of the tennis court. तो जो ऑथर है उनका जो बैग का जिप था वो जैम हो गया था और वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत जैसे आप ही कोई चीज़ जैम हो जाए आप कस के निकालेंगे और फाइनली वो खुलेगा नहीं, उल्टा उसका जो जिप वगैरह है वो टूट जाएगा। और वैसे ही ऑथर के साथ उनका भी जो बैग का जिप था वो टूट गया और सब कुछ इधर उधर बिखर गया। उसके अंदर देखिए ऑथर ने बताया न्यूज़पेपर कटिंग, अदर लूज पेपर, 14-ounce tin of pipe tobacco, magazine, passport, ये सब था। English money film was extravagantly ejected over an area, मतलब सब कुछ इधर उधर फैल गया। और वो कंपेयर कर रहे हैं टेनिस कोर्ट के कि जितना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है उतना दूर सब फैल गया। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttering cascade. Coins bounced to a variety of noisy objects and the now-eyed tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. My tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone. And then changed the cry to my finger as I discovered that I had gashed my finger at the zip and was shedding blood in lavish manner. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think high stakes are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. तो जो ऑथर है उनका जो उनका सब सामान गिर गया और उन्हें बहुत दुख हुआ कि सब गिर गया और खासकर उन्हें बाकी चीज़ों का जो अपने टोबैको का फिक्र हुआ कि टोबैको इंग्लैंड में मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे भी जो टोबैको है वो ज़्यादा इंडिया में ही चलता है, लेकिन हाँ टोबैको डेंजरस है हेल्थ के लिए, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। और लेकिन जो ऑथर है वो सोचते हैं कि what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had came and gone, and then changed the cry to my finger. जो ऑथर का जैसे उन्होंने जिप खोला तो उनका फिंगर भी उसी में फंस गया और उनका फिंगर से पूरा ब्लड आ रहा था और सब उनका फिंगर वगैरह और फिंगर में उन्हें बहुत पेन हो रहा था। ऐसे भी सब जिसको भी चोट लगेगी फिंगर वगैरह में तो उनको पेन तो होएगा ही, ऐसे ही उनको भी पेन हो रहा था ऑथर को और उनका पूरा लैविश मैनर में पूरा ब्लड आ रहा था हाथ से। आगे देखते confused and unable to help, my hair went into panic mode. It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder. I said, I can't believe you
do this for a living, but I'm afraid, so I always have catastrophes when I travel. Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in a crash position. It was only by pulling the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. तो जो ऑथर है एक मेरा एरोप्लेन में बैठे थे और उनका शूलेस खुल गया था, तो उन्होंने टाई करने के जैसे ही नीचे झुके कि उनके जो सामने सीट पे बैठा था आदमी, उन्होंने अपना सीट को पीछे किया और पूरा ऑथर के जो ऊपर का नेक वाला पोर्शन है पूरा नीचे की तरफ हो गया। उस समय बड़ा ऑथर को दर्द हुआ और बहुत चोट लगा ऑथर को। आगे देखते हैं। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like the Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. और जो आर्थर है वो उन्होंने ड्रिंक पकड़ा था और अपने हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक, और उनको एयरप्लेन में मिला तो उन्होंने उसको जैसे ही पीना शुरू किया कि उनका हाथ से छूट के वो उनके बगल में जो लेडी था सब उनके ऊपर लेडी के ऊपर गिर गया। और जैसे ही गिरा तो जो फ्लाइट के अटेंडेंट है उन्होंने क्लीन किया पूरा, और जैसे ही क्लीन किया उन्होंने तो बस क्लीन करके गई और उन्होंने दूसरा ड्रिंक दिया, सॉफ्ट ड्रिंक सेम ऑथर को दिया तो ऑथर ने दोबारा गिरा दिया। तो बस ऑथर ऐसी है बिल ब्राइसन ऑथर का नाम है, बस गिराते रहते हैं सामान अपना। तो इतना उन्हें मतलब लगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, like some cheap prop and in one of those 1950 horror movies with a name like the Undead Limb. आगे देखते, the lady looked at me with a stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by now. This, however, was not my worst experience or played right. My worst experience was when I was writing important thoughts in the notebook. By socks, clutch drinks here, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. I amused her for perhaps 20 minutes with the brain bones mods and retired to the laboratory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. जो ऑथर है वो एक बिग पेन से वो अपने नोटबुक में कुछ लिख रहे थे और सोच रहे थे। तो कभी कभी होता है ना कि हम पेन का जो बैक वाला है पोर्शन उसको अपने माउथ में से माउथ में करके ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही करने में ऑथर भी करते थे और उनका 20 मिनट बीत के उनको पता नहीं चला, पूरा पेन का इंक उनके माउथ के गम्स में, टीथ में, टंग में, सब में लग गया और वो रिमेन रहा, मतलब उनके माउथ में वो दिखता रहा कम से कम कई दिनों तक, several days. So you will understand, I trust, when I tell you how much I am to be safe. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have
just experienced an extremely localized seismic event. Get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside. Wear light-colored trousers without discovering at the end of the day. And I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil, but it is not. But it is not to be. Now and on planes when the food is delivered, my wife says, "Take the lids off the food for daddy," or "Put your hoods up, children, daddy is about to cut his meal." Of course, this is only when I am flying with my family. When I am on my own, I don't eat, drink, or lean over to my shoelaces, and I never put a pen anywhere near my mouth. I just sit very, very quietly, sometime on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. I never did get my frequent air miles, by the way. I never do. I couldn't find the card in time. This has become a real frustration for me. Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles a year. Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. This is because either I forgot to ask for the air mile when I check in, or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. In January, on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. Why? The ticket is in the name of B. Bryson and the card is a name of W. Bryson. I explained to her the close and vulnerable relationship between Bill and William, but she wouldn't have it. So I didn't get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet. Perhaps just as well. Really, I could never go that long without meeting Bill Bryson. तो जो ऑथर है वो अपने एयर माइल्स में जैसे ही बोर्ड करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो टिकट है वो बिल ब्राइसन के नाम से और जो कार्ड है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है, और जो उनका और जो वहाँ पे टिकट चेकर वगैरह थे तो उन्होंने ऑथर को बाली जाने के लिए फर्स्ट क्लास में मना कर दिया और बस ऑथर नहीं जा पाए। तो आपने चैप्टर में देखा कि ऑथर के साथ कितने इंसिडेंट्स हुए और इस चैप्टर का नाम इसी से एक्सीडेंशियल टूरिस्ट होता है। इसका ग्लॉसरी देख लीजिए आप एक बार। अ नैरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग, ये क्या है? yanked, pulled with a jerk, concourse, the open central area in a large public building, disgorging, discharging, exasperation, irritation, sway, sophisticated, polite, seismic event, usually an earthquake. तो दोस्तों आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे चैनल में क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और आप स्कूल में तो कर ही लेते हैं सब, इसलिए हमारा काम है हम आपको चैप्टर बताते हैं और इस चैप्टर के भी असाइनमेंट हैं, जैसे हर चैप्टर के असाइनमेंट होते हैं। आप चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरीज हो आप मेरे को मेल कीजिए। असाइनमेंट लेने के लिए आप मेल कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, stay safe. We will be back with another video of moments only of the beggar chapter. So till then, you can read it further, and we will explain you, and you will be very happy after
very happy after understanding the chapter with us also. So thank you friends for watching my video. Bye.